because what you are saying can equally be said by using these words. My lord, with the utmost respect, my lord. Well, if you read it जवाब दे another way, नहीं, let's hear the counsel. जी, Yes. please सुन लेते हैं counsel को. I'm also reading it the same way. The Supreme Court may make rules and regulating the practice and procedure of the court, My lord. subject to the Constitution and the law. My lord, Which my humble submission. which means Supreme Court can make rules, Yes. whatever rule it wants to make, Ji. but it can't go beyond Beyond the Constitution or any law which already exists. So there तो is वो a मेरा limitation. सवाल अपनी जगह ठहरा हजूर, आप जवाब तो दे Ji, दें. my lord, with the utmost respect, I'm not reading it Utmost as. respect को छोड़िए, सिर्फ जवाब दे अच्छा दीजिए. सर, आपके साथ. मेरा वक्त की But I'm कमी just- है. जी, I know, my lord. I'm just saying that subject to law. Subject means some kind of मैं आपसे restriction. कुछ और मैंने आपसे Sir, आपने अच्छा, आप recommended फिर see- से आप देखें जो मैंने सवाल है उसका तो आप जवाब सर, नहीं मैं आ दे तो रहे. जाऊं उसमें। नहीं, आप आएंगे तो अगर दिन निकल जाए. मैंने कहा अगर ये हम लफ्ज काट दें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, फर्क क्या पड़ेगा फिर? फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट इज नहीं पड़ेगा ना. नहीं, लेकिन इशू Thank you. नहीं, इशू ये चलिए next point. नहीं सर, पहले अभी सुन तो ले, मैं कंप्लीट तो कर लूं सर आपकी इजाजत से. अगर फिर भी कोई लॉ आप रूल नहीं बना सकेंगे which violates any provision of the Constitution. Is this something to be taught to the Supreme Court? No sir, but I'm humbly submitting subject to law does not mean the parliament can legislate. That's humble submission. Subject to, क्योंकि जहां पार्लियामेंट, जहां कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को बना दे, स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज्ड. चलें खैर, जी. अब पता नहीं आप redundancy is I'm not assuming it is, I'm 1, just 2, saying. 3, 4, 5, 6 words of the Constitution we can delete as rendered meaningless. Sir, I'm humbly I'm reading submitting it like that if I accept your Sir, contention. subject to only means, my humble submission is that subject to only means that there's some kind of a restricting, because the constitutional power, which is a continuing power, is being given to the Supreme Noted. Court. Next point. Ji, the point is that the words used in the if Parliament, if Constitution is giving power to the to make any law, it specifically uses. Next page. My lord, until Majlis Shura Parliament makes provision by law in this behalf, the Council may make its rules of procedure. These are the words. Then Article 6.3, my lord, if my lord kindly sees Article 6.3. Article 6.3 or 63? 6.3. Article 6, subclause 3. Majlis shall by law. Article 6, my lord. जी. जी पढ़ लिया. जी. Majlis shall by law provide punishment of persons found guilty of high treason. Then my lord will kindly see 151(2). Freedom of trade. And my lord also reads 150, subject to clause 2, trade, commerce, intercourse throughout Pakistan shall be. Majlis-e-Shura may by law impose such restrictions. May by law. Again, sir. Then my lord, what is the point you're making? I'm making. You're just citing the provisions. My lord, if the word in the 191 was the Parliament can make law, these kind of expressions as provided in the Constitution would have been used, my lord. My humble submission is that when the Constitution is giving the legislature a power to enact a law, then specifically words are used in the part. Mr. Zubairi, there's another question. My lord. Once the rule-making power has been exercised My lord. by the Supreme Court in terms of the Constitution, because the power vests in the Supreme Court, can subsequent legislation displace, as this Act purports to do so, can subsequent legislation displace the rules that have... Whatever happens by the judiciary, by the executive, by the legislature. So maybe the point in saying subject to the Constitution is not to make the obvious point that everything is always subject to the Constitution. Everyone knows that. Rather to fix the position of law. That when the rules are being made, what you just said, when the rules are being made by saying subject to the Constitution and the law can only be as at that time, sir, when the rules are framed. This is the point that is being made here, because Yes. otherwise I was thinking about this, and I've been thinking about this
since the case started. Why subject to the Constitution? Was everything is always subject to the Constitution? Mr. Zuberi, I just want to say one thing. The day we hear this case, the weeks we hear this case, our institution exceeds our disposal. The day we don't, our disposal exceeds our execution. If you think this is a never-ending hearing, this is the last day of the hearing. My lord. Please remember that. You can argue till 11:30, and each one of us may have their views. Let them be expressed in judgments. I want to hear counsel. Sir, when a question, I mean, if you, my lord, please continue. We will restrain ourselves. You just continue your argument so we can be enlightened what you want to tell us, and we can record it, and we can either agree with you or disagree with you in our judgments. So, my lord, Please, next point. Please go on to the next. Please go on to the next point. So my point is that, again, my lord, that when the law is being given to the parliament, the specific words, hence subject to law, and for that I want to take you, my lord, I have placed certain case law before lordship, if my lord has that. दे दिए या देंगे? ये रखे हुए सर. पहले से नहीं दिए? सर दिए हैं, बहुत पहले से दिए हुए रखे हुए हैं. आज? नहीं सर, मतलब उन्होंने कहा जब आप आर्ग्यू करेंगे उस वक्त दीजिएगा, मैं तो कब हर रोज लेके आ रहा हूँ सर. Sorry, this is most unfair. हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें. तो ये केस हम हाँ ठीक है, you are right, we are wrong. नहीं सर, we have told everybody to file. हाँ भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से. इस्लामिक ट्रेडिशन तो बताते नहीं है. अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूँ. He is such a senior counsel. My lord, may I take page 144 of this? Is a case. क्या आप हमें proposition बताएं? पहले proposition बताया जाता है. How a subject to law has to be interpreted. That is my. ठीक है, बता दें केस का नंबर. Case is page 144 of this booklet, sir. जी. Winberry versus Salisbury. It's a case from the American jurisdiction, and they have interpreted this word. What is the meaning of? And their constitution also provided this thing. Their constitution also permits of documents in courts. चलिए खैर 144. Sir, this is just a case law which I'm citing. ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं sir, it is Supreme Court of New Jersey, sir. अच्छा ठीक है. जी. My lord, page 145. If my lord kindly sees the sixth line from the top. आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ fundamental rights को नहीं देखना होगा. आपको तो ये केस में क्या fundamental right है बताइए ना हमें. इसमें fundamental rights to justice का my lord was saying कि कौन सा आर्टिकल बता दें वो वाला आर्टिकल. आर्टिकल right to life. राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है तो मैं लिख लूं. जी एक्सेस टू जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बीन हेल्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्ड्स ऑफ आर्टिकल 9 से. तो आप कह रहे हैं लिटरल रीडिंग में तो नहीं है, इंटरप्रिटेशन. अच्छा लिटरल में नहीं है ना, तो ये तस्लीम आप करते हैं. लिटरल में नहीं है, इम्प्लाइड रीडिंग में है. नहीं, जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल व्हिच इज बाइंडिंग इज सेज के जी एक्सेस टू जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बाइंडिंग, इट मे बी बाइंडिंग ऑन यू नॉट ऑन अस. सर सिंध हाई कोर्ट बार का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879, which is a full कोर्ट फैसला, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में एक्सेस टू जस्टिस इंडिपेंडेंस. चलिए ठीक है, मेरा सवाल का जवाब मिल गया. आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े. हाँ मेरे साहब ये बता दें कि आप कह रहे हैं एक्सेस टू जस्टिस की बात है, सिटीजन एट लार्ज की बात है. इस एक्ट के तहत वो कौन सी कोई ऐसी प्रोविजन में है जो पब्लिक को डिबार करती है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? ऐसे कोई प्रोविजन है जो कह सके कि इसमें जो बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इफ दिस लॉ, इसमें अच्छा लॉ होगा, बहुत अच्छा लॉ होगा, लेकिन इशू ये है कि इट इज द कॉम्पिटेंस. अगर कॉम्पिटेंस नहीं थी देन इट्स नॉट अ राइट लॉ, इट इज अल्ट्रा वायरस. मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ. इस एक्ट को देखने के लिए हमें ये देखना है कि आया इसकी प्रोविजन या टोटल एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, या इसके जरिए कोई पब्लिक या किसी सिटीजन का हक मारा जा रहा है कि उसे पहले तो अपील की हक थी अब नहीं दिया जा रहा है, पहले ट्रायल की हक थी अब नहीं दिया जा रहा है. ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है कि हम कह सके कि ये इलीगल? सर मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या ये कानून साजी हो सकती है. जवाब दें उसके बाद पहले. मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इख्तियार था के पास टू मेक दिस लॉ. चलिए इसमें बताता हूं. आपने पहले कहा कि 1980 में रूल्स बने जी, वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी. ये तो आप मानते हैं कि रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी. तो क्या आप बता सकते रूल बने 191 के तहत सर, 191 आर्टिकल रूल लॉ के तहत. आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी बिल्कुल एग्जिस्टिंग. प्लीज मुझे ये बता दें, मेरी नजर से तो नहीं गुजरे
1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस को नहीं, फॉलो करा? बिल्कुल नहीं तो था। ये रूल कैसे बने? अंडर 191 56 के बने, पहले बने 1956 में। लॉ कहाँ गया? सर लॉ, अगर कोई लॉ है, वर्ड यूजेस सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ मींस कि कोई लॉ अगर होता, कोई भी लॉ हो, इट कैन बी एनी लॉ, सब्सटेंटिव लॉ। आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे, जब आप 175 पे सब्सटेंटिव थे। लॉ हाँ। कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते, ठीक। तो ये मेरे हम्बल सबमिशन थी। ठीक सर। ठीक ठीक। तो ये लॉ आप प्रोसीजर, अगला पॉइंट बताएं। फिर अगर नोट कोई करें। होता- If I may ask you a question. The equivalent to Article 184(3) of our Constitution, I think, is Article 32 of the Indian जी Constitution, मालूम, which guarantees the right to move the Supreme Court for violation of fundamental rights. If memory serves me right, Mr. Ambedkar, who is regarded as the father जी। of the Indian Constitution, in relation to this jurisdiction conferred on the Supreme Court, said it is the very soul of the Constitution. जी Now, if that is correct, and in India no one has ever doubted that that is correct, we are here talking of the very soul of the Constitution. yes, and It seems to me that, and this is my question to you, that can a challenge to a law, Yes. so with all due respect, जी it is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the Constitution prohibits जी directly or indirectly. जी So therefore, I think the point that my learned colleague has made, that this is at most, or at worst perhaps, an indirect amendment of the Constitution, which is perhaps barred by the Constitution itself. Sir, tomorrow if this law नहीं, tomorrow नहीं, अभी हम यही देखते हैं। if this नहीं, law अभी- is अब upheld, ये बिल्कुल for हम नहीं example, करेंगे। then the parliament can No, also no, decide no, that the no, last, no, the junior most no, judges will no, no, जी, no. जी Zubair Yeah, साहब, you cannot, we have a particular case, argue that. What happens tomorrow, I am not one who gives judgments on the basis of surmises. इस पे कर लें, आप बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट्स बार बार दोहरा रहे हैं। Zubair साहब, जरा जल्दी खत्म कर लेना, आपका वक्त निकल जाएगा You are दूसरों का। representing the Supreme Court Bar Association. You are not a petitioner nor respondent. क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए 184(3) के पावर्स